Hello, everyone. We will be starting in the next 5 minutes, so please. Uh,
Hello and welcome everyone. I'm Niharika and I'll be your host for today's Cybercrime Awareness Program. First of all, thank you for joining in with us. We hope that this session will be insightful to you. A little about this program. This is a training program under the CyberShield project by Naksh Foundation in collaboration with Make Mission Foundation. Throughout the webinar, we encourage active participation, so feel free to ask any questions. We have also taken up your questions in the responses of the Google form, so we'll try our best to address them. The flow of this program would be in the first half, I'll be explaining you about cybercrime and its types, the tips for safety with examples as much as I can. And then Aman will take over and explain you how to file a complaint in the cybercrime portal step by step. After that, we'll have a Q&A session for any doubts that you'll have. And then in the end of the session, we'll be providing you with a feedback form, herein after which you will be awarded with your certificates. So we request you to please be with us till the very end. So we'll begin with the session now. First of all, I hope that everybody is aware of what cybercrime is for the basic knowledge that we have of it. And a basic definition is that cybercrime refers to criminal activities conducted through digital means, often involving the use of computers, networks, and the internet. Most of us are students here, and we are on social media 24/7, as I know, and we know how cyber crime has its bandwidth. So these activities can range from hacking, identity theft, and phishing to spreading malware, ransomware attacks, and online fraud. Cyber criminals exploit vulnerabilities in the digital systems and to gain unauthorized access. So basically जो cyber criminals होते हैं हमारे, वो उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम. जब आप बैंकिंग फ्रॉड्स के बारे में बात करो या अगर आप किसी दूसरे जॉब फ्रॉड्स के बारे में बात करो, तो जब वो आपसे मनी मंगवाते हैं एंड वी जस्ट गिव इट आउट विदाउट इवन गिविंग अ सेकंड थॉट, that is not just because of the monetary benefits. That after that, kabhi kabhi it is also because of the physical, sexual, or mental abuse that happens. Say uh, most of us we are students, so dating apps is very common in these days. So जो dating apps पे आप मिलते हो लोगों से, there are few आगे further we'll know about the examples and the cases that are happening, where you'll know that it is not just the monetary benefit, but it is also an angle of physical, sexual, and mental abuse that is happening because of the cybercrime. According to a study by a leading industry research organization, 90% of all the cyber attacks are caused by human negligence. That where we are negligent और हम लोग उसको study नहीं कर पाते हैं. And it is okay because एक situation पे आप कभी कभी बहुत panic कर जाते हो and you cannot understand what you have to do and what should be your next step. So we're here to help you in that. And therefore, this is why cyber security awareness is important for everyone today, and this workshop is being conducted. Next is what are the types of cybercrime? It's identity theft, online and social media related crime, digital banking frauds, psychological tricks, attacks via viruses and mobile application. We'll go one by one with each of these. First of all, with identity theft. So, identity theft is the act of wrongfully obtaining someone's personal information without their permission. The personal information may include their name, phone number, address, bank account, Aadhaar card, or credit card number. All of us, we have our own Aadhaar cards, we have our mobile numbers we are giving out our information public these days. और उस वजह से ना जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो एक हद तक ही हम उसको प्राइवेट रख सकते हैं. जो हमारी प्राइवेसी होती है कहीं ना कहीं एट वन पॉइंट इट कैन गेट ब्रीच्ड. उसकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत छोटी छोटी चीजें होती है. सपोज यू आर गोइंग टू अ साइबर कैफे, यू वेंट टू अ साइबर कैफे, वहां पे आपने अपनी आधार कार्ड की प्रिंट आउट निकलवाई, आपको कहीं सबमिट करवाना था, आपने 2-3 फोटो कॉपीज निकलवाई. You forgot to log out of your WhatsApp, you forgot to log out of your email, or you left the photocopy there, one of your photocopies there. There are many organizations that just work on the photocopies. तो अगर आपकी आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आपकी पैन कार्ड की फोटोकॉपी किसी भी गलत इंसान के हाथ लग जाती है, तो it can be a situation where it can affect you a lot, your situation a lot. So these fraudsters can use stolen personal information. वो चुराते हैं and then they use it for their own benefits. जैसे वो आपके बैंक अकाउंट का एक्सेस गेन कर लेंगे, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका नाम है, आपका फोन नंबर है, आपका एड्रेस है, कहीं पे भी डाल के
these things we give out common. अगर हम लोग किसी भी साइट पे जा रहे हैं, हम लोग उसमें अपनी ये इन्फॉर्मेशन, ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम एनी विच वेज दे देते हैं अपने किसी भी साइट में लॉग इन करने के लिए, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी। समटाइम्स कुछ साइट्स उसको उसके थ्रू आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, वेयर आपके आइडेंटिटी थेफ्ट का सिचुएशन आ जाता है। जैसे अगर सपोज करो आपके बैंक अकाउंट का एक्सेस हो गया, अगर उसने आपकी आईडी से, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से किसी लोन के लिए, किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट से लिंक हो रहा है, आपके पैसे कट जाएंगे, उसको तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना। दिस इज उसने कुछ रिफंड फाइल कर दिया टैक्स का, या उसने कोई ड्राइवर्स लाइसेंस अपना फेक आईडी बनवा ली उसके आपके आईडी से, एंड ही यूजेस समवेयर which is very wrong. Somewhere maybe he's using it for theft, maybe he's using it for any other wrong purpose. So this is where identity theft is coming. Next is hacking and gaining into the social media accounts. बहुत common चीज है identity theft के लिए। आपका इसके अंदर impersonation भी आ जाता है, बिकॉज आप सोशल मीडिया चला रहे हो एंड यू नेवर नो, कभी भी आपका कोई भी, आप कितनी भी आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने करके रखा हो, मोस्ट प्रॉब्ली इट इज एडवाइज्ड कि जब भी आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन अपने अकाउंट में लगा के रखो, आपके पासवर्ड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, सो दैट इट इज इजी फॉर यू कि अगर आपको रिकवर भी करना हो कुछ, तो जो ओटीपी आएगा वो तो आप ही के नंबर पे आएगा। सो इट इज easier and it gives out less opportunities for a person to hack in your account. So this is how it works, gaining and social media accounts. फर्दर नेक्स्ट हमारा आता है मिसयूज ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, जहाँ पे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया साइबर कैफे का, कि आप गए वहां पे, आपने फोटोकॉपीज निकलवाई और एक या दो फोटोकॉपी आपसे बाय चांस वहां पे रह गई, और जो तीसरा चौथा बंदा आया उसने आपकी फोटोकॉपी उठाई एंड ही यूज्ड इट समवेयर एल्स, उसने कहीं और सबमिट कर दी उसको अंडर योर नेम। तो क्योंकि उसमें फोन नंबर एड्रेस सब आपका है, अगर वो किसी गलत चीज के लिए यूज है तो आप ही के ऊपर केस आएगा वो। So this is where the misuse of photocopies happens. Next is card skimming machines. I don't know how many of you are aware of this, because this is a very new concept that we've known about. So card skimming machine is done through a device, small device. It is called a skimmer. So the magnetic strip होती है आपके कार्ड पे, if you know, वहां पे आपकी ना नेम होता है और क्रेडिट कार्ड के, डेबिट कार्ड का नंबर होता है, एक्सपायरेशन डेट होती है, सब होता है उसमें। वो स्किमर उस डिवाइस में डालते हैं आपका क्रेडिट कार्ड, और वो सारी इंफॉर्मेशन ट्रैप हो जाती है, एंड देन द स्किमर कैप्चर्स ऑल दीज डिटेल्स, एंड वो जिसने भी वो चुराया, वो स्किमर आपका कार्ड के डिटेल्स उसके पास पहुंच गई, एंड उसका पिन उसको कहीं से पता है, उसने यूज करा और नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में से पैसे गायब। दिस इज हाउ द कार्ड स्किमिंग मशीन्स वर्क। सो इसमें भी जो ये बहुत, अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि जो मशीन है वो क्रेडिट कार्ड मशीन है या कार्ड स्किमिंग मशीन है? तो जो कार्ड स्किमिंग मशीन्स होती है ना, वो आप इट इज अनदर वो ऑफ, लाइक व्हेन यू सी इट, यू आइडेंटिफाई कि दूर से आपको पता चलेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मशीन्स में इट कम्स फ्रॉम बिलो, यू नो हाउ यू पुट द कार्ड, राइट? So it is a visible difference. So you have to take care when you are giving out your credit card. You need to take care कि आप जो कार्ड दे रहे हो एक legit machine है and it's not just a skimmer. Next is what are the tips where we can be safe from identity theft? Don't give out your PIN in public whenever you are using your card for any purpose, for shopping, when you're going out. प्लीज मेक श्योर कि आपके आसपास कोई नहीं है, क्योंकि आप एक क्राउडेड स्पेस में यूज करते हो अपना कार्ड, और अगर आप यूज कर भी रहे हो तो उसका प्लीज मेक श्योर दैट इट इज हिडन फ्रॉम एवरीबॉडी, बिकॉज आपके पीछे कोई खड़ा है, आपके साइड में कोई खड़ा है, एंड इट इज वेरी इजी फॉर देम टू टेक होल्ड ऑफ योर पिन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ दैट. नेक्स्ट इज ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स. आई डोंट थिंक सो दैट हमें सोशल मीडिया का वो देने की जरूरत है, introduction देने की जरूरत है, because all of us know that social media has been a very integral part of our lives. So social media पे हम practically अपनी पूरी life डाल देते हैं. We have public Instagram accounts, we have public Twitter accounts, जिसपे हमारी information कहीं ना कहीं से हम किसी ना किसी तरह से story के through, post के through डाल देते हैं. This possesses a threat to an individual, as unwanted access to social media profile can cause loss of information, defamation, or even worse consequences such as physical and sexual assault, robbery, etc.
How does robbery and sexual assault comes under online and social media related crimes? अगर आप सपोज करो आप एक जगह पे गए, right now we are sitting at our homes. In the next 1 hour you are going out somewhere, you put out a story. आपको पता है there is a option on Facebook where you can check in your, बहुत पुरानी, it used to be very famous जहाँ पे हर every person used to check in that they're here right now in this place, and it was very easy for a person to take track कि आप कहाँ पे हो at what point of time, जिसकी वजह से सपोज करो आप अभी अपने घर से बाहर हो, अपने घर से बाहर हो, आप सबको पता है कि आप अपने घर से बाहर हो, घर पे कोई नहीं है, पीछे से किसी ने आया वो चोरी करके चला गया. इट इज दैट इजी. एंड दिस इज हाउ दिस इज ऑल्सो नोन एज थेफ्ट, बट वो पीछे से बिकॉज इट इज थ्रू अ सोशल मीडिया अकाउंट, इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज साइबर क्राइम. फर्दर हम लोग का जो इसके टाइप्स हैं वो है सिंपैथी एंड रोमांस फ्रॉड, साइबर स्टॉकिंग एंड बुलिंग, impersonation of profiles and fake profiles, job and matrimonial frauds. First is sympathy and romance fraud. तो एवरीबॉडी नोज, आप ऑनलाइन हो, आप दोस्त बना रहे हो ऑनलाइन, आप किसी से बात कर रहे हो, एंड देन एक पॉइंट के बाद व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू टॉक टू अ पर्सन एंड यू स्टार्ट गेनिंग देयर ट्रस्ट, एक वो आता है कि पॉइंट आता है कि आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लग जाते हो दूसरे बंदे पे, एंड वो आपसे इफ दे आस्क यू एनीथिंग यू विल गिव आउट. So there is an example, a very personal, known example, because one of my friends went through it. So what happened was that she was talking to someone, and they had conversations. 1 or 2 weeks happened, and after that, the guy asked her that her mother is in a very critical situation. Therefore, he needs money, and not just 1 or 2 thousand, he needs 15-20 thousand for her treatment, and he wants it right now because uske account ka access usko nahi mil raha hai, and he's not able to access his bank accounts kisi bhi tarike se, to she needs to transfer it to in his account sham tak, and he'll give it back. So because she trusted him and she's like कि ठीक है, आपकी जरूरत है, I understand, you don't give it a second thought when you're talking to someone. If you're friends, you just help them. So she transferred the money to the guy, and the next day he comes again texting her कि मेरे को इंजेक्शन लेना है उनके लिए, और मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में, मैंने बैंक में कॉल करा था बट अभी छुट्टी चल रही है, एंड दे ब्लॉक्ड माय अकाउंट. ही गेव न्यूमरस रीजंस व्हाई he cannot call into in his own bank account. So that is where uski at least 50 to 60 thousand that woman gave out to the guy, and in the next 2-3 days he was nowhere to be seen. He blocked her. He went out. He changed his numbers. Everything was out. Her money was gone. This is how sympathy and romance fraud occur, and people tend to trust very easily on social media because अगर आपसे 2-3 बारी किसी ने अच्छे से बात कर ली, it happens and it is normal human behavior. So please be aware of that. Next is the dating apps fraud. Dating apps fraud is the most known in these days. आप किसी से dating app पे मिलते हो, आप उससे तीसरे दिन मिलने जाते हो, and you don't know who that guy is behind the phone screens. So dating app there is a very recent case that I know, that there was this one person, he went to meet someone on a date, and the guy sexually assaulted her and asked for money. He said that if you'll not give me the money, I'll give out your pictures in social media. मैं वो post कर दूंगा, बाहर डाल दूंगा, or threatened her and asked for money, and even sexually assaulted her. So dating apps, although you are on a dating app, and then it is not like it's very unsafe, but you should know, you should have a background check, and you should be aware कि आप जिससे भी मिलने जा रहे हो, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो किसी से स्ट्रेंजर से मिलने, आप अपनी लोकेशन अपने फ्रेंड्स को दो, आप अपने जहाँ पे आप जा रहे हो उसकी पूरी डिटेल्स, उस बंदे की डिटेल्स, जिससे भी आप मिलने जा रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, किसी ना किसी को बता के जाओ, so that it is easy for you to back it up. Because it is not just limited to sexual assault. Sometimes people also get kidnapped. This has happened. Next is impersonation and fake profiles. It is very frequent these days. और क्योंकि आप सोशल मीडिया पे अपनी फोटोज डालते हो, किसी को 2 मिनट नहीं लगते आपकी फोटोज उठा के एक नया अकाउंट बनाने में, आपका आईडी यूज करने में,
और आपका नाम यूज करके उसको किसी भी चीज में यूज कर सकता है, वो किसी भी चीज में, XYZ चीज में। सपोज आपकी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो पब्लिक है, आपकी फोटोज किसी ने उठाई, उसने एक अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पे, उसने आप ही के फॉलोअर्स को टेक्स्ट करा कि हाय, आई नीड दिस अमाउंट ऑफ मनी, आई एम वेरी डायर नीड ऑफ मनी एंड आई नीड इट राइट नाउ, एंड बिकॉज इट इज योर अकाउंट, आपकी फोटो है, तो ट्रस्ट का वो ये भी नहीं सोचेगा, कोई सेकंड थॉट भी नहीं देगा कि यार इसको तो मैं जानता हूँ, तो आई ट्रांसफर द मनी. So it is very easy for a person to get to con another person through impersonation and fake profiles. So whenever this is happening, please do make sure from the person, usko call karo, usko text karo WhatsApp pe ki is that you. And because abhi recently only in the last 2 or 3 months, there was a series of fake accounts that were in making. एक ही अकाउंट था जो 4 लोगों के फेक अकाउंट्स बार बार चेंज करता रहता था, कभी किसी की प्रोफाइल लगा लेता था, कभी किसी की प्रोफाइल लगा लेता था, एंड इट यूज्ड टू टेक्स्ट बिकॉज amongst our friend group it has happened. So out of personal experience I'm telling you, please contact the person who has texted you personally ki do you need that money, is that you, and confirm it before doing any transaction, because वो इन ऐसे ऐप्स के लिंक्स भी भेजते हैं आपको, जिसके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी पर्सनल बैंक इंफॉर्मेशन बाहर जा सकती है, नॉट जस्ट मनी, वो तो जाएगी जाएगी, साथ में आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन भी जाएगी. एंड वो लिंक्स का कोई भरोसा नहीं होता बिकॉज वो लेजिट लिंक्स नहीं होते. Next is cyberbullying. Cyberbullying that takes place is over the digital devices, and it can occur through any medium: SMS, social media, forums, or gaming apps where people can view, participate, or share content. साइबर बुलिंग इज वेरी कॉमन दीज डेज. आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, रील स्क्रॉल करते करते आप कमेंट सेक्शन में जाओगे, अगर 50 अच्छे कमेंट्स है तो आपको 10 नेगेटिव कमेंट्स एनी विच वेज दिखेंगे. आप जब रील स्क्रॉल कर रहे होते हो और फनी कमेंट्स वाली रील्स आती है ना कि सी दिस इज अ फनी कमेंट, टू एन एक्सटेंट इट इज ओके because you're just being sarcastic. There's a very fine line between sarcasm and bullying. If you know that person and then you're acting sarcastic in their comments, that is a very different thing. But when you are going in a stranger's कमेंट सेक्शन, आप एक ट्रोल अकाउंट बना रहे हो, ऑल टुगेदर एक फेक प्रोफाइल बना के, जस्ट बिकॉज आपको उसके कमेंट्स में जाके उसको बुली करना है, एंड यू राइट ऑल द abuses and everything that you're keeping, that comes under cyberbullying. The intention is to cause embarrassment or humiliation for the other person, and at times it can also cross the line into unlawful criminal behavior. एट वन पॉइंट आप इतना ज्यादा कमेंट कर करके उसको इरिटेट कर देते हो, वो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिफेमेशन एंड साइबर बुलिंग under the act, IT Act. At times it can yeah, so the comment section. And अगर आप सोशल मीडिया पे हो, अगर आप किसी की, अगर आपको कुछ नहीं पसंद आ रहा कंटेंट, यू जस्ट मूव अहेड. You don't have to stop and you don't have to tell, don't have to bully a person out of it कि भाई क्या डाल दिया, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया. It's their life. Unless and until they're just doing something which is negative, you don't have to go and bully someone just because they are putting their life out on Instagram. Next is cyber stalking. A cyber stalker relies upon the fact that her true identity is not known in the digital world. A cyber stalker targets the victim with threatening, abusive messages and follows them in their activities in the real world. अगेन यहाँ पे जैसे हमने अभी जो फेसबुक चेक इन वाला हमने बोला था, आपने आपने कहीं पे, आज अभी आप कहीं पे हो, आपने स्टोरी डाली है अपने इंस्टाग्राम पे, द पर्सन, किसी XYZ पर्सन को पता चला, ओ आप यहाँ पे हो अभी, दे कम एंड दे, you don't know, you never know, they come and harass you, they come and molest you, कुछ भी हो सकता है. It can be very unsafe to you because जब आप, कोई आपकी सोशल मीडिया का ट्रैक रख रहा है, कोई जान रहा है कि आप इस टाइम पे, इस पॉइंट पे यहाँ पे हो, आप इस पॉइंट पे ये कर रहे हो, तो आपकी डे टू डे लाइफ के बारे में उसको एनी विच वेज पता है. तो इट इज वेरी अनसेफ फॉर यू एज अ पर्सन एंड एनी पर्सन इन योर फैमिली. आपके थ्रू कोई किसी के पास जा रहा है, बिकॉज वी हैव सीन सच केसेस हैपनिंग वेयर अ पर्सन हैज पुट आउट देयर समथिंग अबाउट गोइंग समवेयर इन फ्यूचर. सपोज करो वो ऋषिकेश जा रहा है, पीछे उसके घर में कोई है,
the person comes in, they put out robbery, or they उनको कोई दिखता है तो वो मार के चला जाएगा. It is that it can come to a point where it can actually be a criminal offense. So you have to be very careful when you are using online social media platforms, and please make sure कि आप no one is stopping you to put out your information, या आप कि आप बिल्कुल ही पोस्ट ही ना करो, कि आप कुछ डालो ही मत, ऐसा नहीं. there's nothing like that, but just be aware of what you're putting and where you are putting, and just make sure ki it doesn't harm you in any way or somebody else in any which ways. Next is digital banking frauds. All of us, everybody right now is using UPI, is using Paytm, is using Google Pay, and I hope कि आपको अभी Paytm का recent पता होगा कि it's shutting, mostly partially shutting down on 29th February. Also, we would also like to know कि आपका अगर आपके साथ कोई interaction हुआ ऐसा where something has happened, someone has made your fake profile or something has happened with you. If anyone wants to share about that, you can raise your hands. If anyone is interested in sharing their story or something that they know about, or some you have been, is anybody interested? Please unmute yourself, because I cannot, I'm sharing the screen, so I cannot view who is raising the hands. Please unmute yourself and please share. Hi, Dhruv, do you want to say anything? You can please unmute your mic and you can speak. First of all, very good evening, ma'am. Good evening. Well, I was just working with cybersecurity in IIT Madras. I was just studying and doing some certain courses regarding that. So, from past few months, I'm working as a cybersecurity expert and a developer as well. And I hope, like you told about the social media influence towards the cybersecurity awareness and all those. So, if you, I assume that you know random Sena like that. So, do you consider that even those things are included in the cybersecurity awareness? Um, I'm sorry, can you please repeat it, because we lost your connection. The last part. Am I not audible? No, you are audible, but I maybe something is wrong with my connection. The last part, can you please repeat that if you can? Ma'am, like I assume that you use social media like Instagram and all. Yeah, yeah. So I assume that you know the team like Random Sena and others. All they used to do is that they create cyber awareness and all. So they use the cybersecurity experts in that. So do you think that it is included in the cybersecurity things and the cyber awareness as well? See, Dhruv, there are a lot of foundations and there are a lot of missions that are going on right now just to create cyber awareness. Because all of us know that this is an era of this is a digital era, and there is a AI technology that is being very famous right now, and we need a cyber awareness right now at this point. Because in the future years हमें पता है कि AI इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा. आप डीप फेक्स के बारे में आप सबको पता होगा, कितने डीप फेक्स बन रहे हैं एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू, कितने लोगों को इफेक्ट कर रहा है, मेंटली कितना इफेक्ट कर रहा है. तो to create awareness, there are a lot of foundations that are working with it, and I think if any foundation, random Sena, or anything they are working with it, it includes in cyber awareness about even अगर आप देखो कि जैसे जो deep fake, अभी recently there is this case that has happened with one of the actresses where her deep fake was being socialized everywhere, right? तो उस deep fake की वजह से कितने सारे लोगों को उनकी, because she was an actress, तो it was easy for her, but if it was a normal person, it was someone amongst us, तो हम लोग को उस चीज को अपना नाम क्लियर करने के लिए बहुत वो लग जाता. You understand the point. So if anybody is creating awareness, that is it includes, it comes under the cybersecurity awareness. I hope I answered your question. Thank you, ma'am.
Thank you. Madhur Agarwal, you raised your hand. Please unmute yourself. Very good evening, ma'am. Am I audible? Yeah, yeah, you are audible. Ma'am, actually, I have a question. Sure. My question is basically nowadays we used to post a lot of pictures of ourselves on social media platform, and some of our profiles are very public. So anyone can see and anyone can use our image. So how can we ensure that our data is safe and not going in any bad hands? See, when you are using social media and you have a public account, you are any which ways giving a person to, because you have a public account, तो आप किसी को रोक नहीं सकते हो इस पॉइंट पे कि वो आपकी images यूज ना करे. बिकॉज अब ऑब्वियसली अगर मैं अभी मेरा अकाउंट पब्लिक है और कोई एक्स वाई जेड पर्सन मेरे अकाउंट को उठाता है एंड ही गोज बट आपके व्हेन इट इज यू कैन नॉट जस्ट एक्चुअली स्टॉप इट बट अगर आप ये देख सकते हो आप अगर आपको लग रहा है कि आपकी मिसयूज हो रही है फोटोज कहीं पे भी तो यू रिपोर्ट इट यू मेक पीपल अवेयर ऑफ इट आप रिपोर्ट करवाओ उस अकाउंट को आप डिलीट करवाओ आप साइबर क्राइम में बोलो दिस इज द पर्पस दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज कि आप उसको कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के अंडर रिपोर्ट करवाओ बिकॉज you as a normal person you cannot do anything if you have a public account it is not in your hands. Now that you know that there is a fake account, you go ahead, you report it, you report the account, you tell your friends to report the account. और as far as I know, Instagram अगर 10 से ऊपर रिपोर्ट्स एक अकाउंट के आते हैं impersonation के तो immediately उस अकाउंट को डिलीट करवा देता है. तो you can make sure of that. और otherwise there is always an option to keep your accounts private. There is always an option to put locks on your account and be safe and just accept the followers that you want to see your content that you want people to see. So that is that. Because a few time back, actually in 2023 last November, a friend of mine got to know that her pictures was being used by any other person, Okay. and her account was not public though. He randomly clicked the picture from the college and used it. या सो दैट impersonation जहाँ पे उसने कोई अगर स्क्रीनशॉट नहीं ली तो वो एक अनदर दैट इज अनदर क्रिमिनल ऑफेंस दैट आपने किसी की फोटो ली दैट इज साइबर स्टॉकिंग. उसको पता चला कि वो शी इज समवेयर एंड शी कैन रिपोर्ट इट ऑन द साइबर क्राइम पोर्टल और शी कैन गो टू अ पुलिस स्टेशन. फर्दर वो अभी आपको पता चलेगा कि आप किस वेज के थ्रू साइबर क्राइम को अपने वो कर सकते हो क्या कहते हैं ये वो कर सकते. आई एम सॉरी आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड बट यू कैन give you can. Both are. हाँ तो I'm getting so your point. या सो बेसिकली इट्स दैट कि आप अगर आपके अगेंस्ट कोई साइबर क्राइम हुआ है तो आप साइबर क्राइम पोर्टल में जाके जा सकते हो एंड उसमें पुलिस स्टेशन में जाके उसको दे सकते हो कंप्लेंट करा सकते हो. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल टेक इन द Q&A सेशन. आई विल कंटिन्यू विद द स्लाइड्स. नेक्स्ट इज द डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स. यहाँ पे यूपीआई हाँ वी वर टॉकिंग अबाउट यूपीआई और पेटीएम आप यूज करते हो. जब आप यूज कर रहे होते हो तो there are a lot of clone websites that are coming right now. आप किसी भी there I think recently there is this बैंक अकाउंट जिसकी क्लोन वेबसाइट बनाई थी जिसके थ्रू बहुत लोगों ने पेमेंट्स करी थी और उनका बैंक अकाउंट खाली हो गया था क्योंकि किसी ने उन्होंने एक फेक वेबसाइट से अपने पिन डाल दिया था अपने क्रेडिट कार्ड इन्फो डाल दिया था और वो सारे उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी दैट वाज आउट देयर. सो बैंकिंग फ्रॉड्स कैन अकर. सपोज समटाइम्स आपको मैसेजेस आते होंगे रैंडम मैसेजेस आते होंगे कि आपको इतना इतना वो मिला है. आप इसमें इस लिंक पे जाके अगर आप क्लिक करोगे आपको लॉटरी मिली है आप इस लिंक पे जाके क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना अकाउंट में आपके पैसा है. दीज लिंक्स आर फेक. प्लीज वेरीफाई इट बिफोर क्लिकिंग ऑन एनी लिंक. एनी रैंडम टेक्स्ट मैसेज किसी रैंडम नंबर से टेक्स्ट मैसेज आ रहा है कोई रैंडम कॉल्स अगर आपके पास आ रहे हैं कि मैम आप अपना यूपीआई पिन हमें दे दो हम आपको बता देंगे कि आपको इतना कैशबैक मिला है. दे सच
कॉल्स नेवर हैपन फ्रॉम एन ऑफिशियल एंड वेरीफाइड साइट। कभी भी पेटीएम आपको कॉल करके ये नहीं बोलेगा कि आप अपना यूपीआई पिन दे दो और हम आपको बता देंगे कि आपका कैशबैक कितना है। कभी भी गूगल पे ये नहीं बोलेगा। दे ऑलवेज टेक्स्ट और दे कॉन्टैक्ट थ्रू ईमेल्स। इवन ईमेल्स आप कभी कभी आपको यू डोंट चेक एंड आप ईमेल पढ़ते हो, एक ईमेल पे लिंक आता है, यू गो हेड विद इट कि किसी ने ये लिंक पे आप क्लिक करो, फर्दर आप ये ऑपरेशंस पूरे करो, आपके अकाउंट में 10,000 आ जाएंगे। नथिंग लाइक दैट। आप अगर आप उस सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट इट इज अ क्लोन वेबसाइट? ऑल्दो whenever you see जब आप एक वेबसाइट यूज करें, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज whenever you if you have a laptop, please make sure that it has antiviruses in it. It has quick heal and other जो भी antivirus आते हैं, I think McAfee वाला, please use that because that will help you identify what sites are important, no, secured and what are not. There is always on the website, आप जो website वाला बार होता है उसमें एक logged का option होता है और एक warning का option आता है। अगर वहां पे एक logged का option है, इसका मतलब वो site जो है वो secured है, और अगर वहां पे एक warning का option है तो इसका मतलब there is something wrong with that website. That is how it works. So please whenever you're using a website further in future, आप एक बार चेक जरूर करना कि वहां पे लॉक का ऑप्शन है वो सिक्योर वेबसाइट है भी कि नहीं। एंड इवन अगर आपकी लैपटॉप में एंटीवायरस है तो वो ऑटोमेटिकली आपको उस लॉगिन उस वेबसाइट में लॉगिन ही नहीं करने देगा अगर वो कहीं पे भी थोड़ा सा भी अनसिक्योर्ड वेबसाइट है तो। इट विल आस्क फॉर योर परमिशन, इट विल आस्क इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड और नॉट, एंड you can always say no. Next is when you are using UPI pins in public place, please make sure कि आपकी फोन की brightness बहुत कम है. It's like nil. Another person cannot see your UPI pin, because that is one of the safety tips that I would like to tell, because I personally use that whenever I am making a UPI payment. Please make sure that आपकी फोन की brightness एकदम लो है and it is only visible to you, because आपके आसपास 50 लोग खड़े होते हैं और उनको अगर आपका यूपीआई पिन पता चल जाएगा तो किसी भी तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। So please protect your pins, protect how you are using your bank accounts. Do not use a weak and same password for every account. अगर आपका एक अकाउंट बैंक अकाउंट से हैक हो गया है और आपके 4 बैंक अकाउंट्स का सेम पासवर्ड है तो आप ये मान के चलो कि आपके वो 4 अकाउंट भी जा चुके हैं क्योंकि आपका सेम पासवर्ड है। अगर आपका पीएनबी का अलग है, स्टेट एसबीआई का अलग है, आपके हर अकाउंट का अलग पिन बनाओ। अगर आप एक ही पिन बना के रखोगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर अ हैकर टू टेक इन ऑल योर अकाउंट्स। फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे उस मामले में। तो प्लीज मेक श्योर कि आपका पासवर्ड जो है बैंक्स का एंड आपके डिजिटल एप्लीकेशंस का, उसको आप स्ट्रॉन्ग रखो। यूज नंबर्स, यूज कीज, यूज अल्फाबेट्स, सब यूज करो उसमें, एंड मेक अ स्ट्रॉन्ग password and create for it yourself, and don't make same passwords for every bank account. Next, when you are using UPI, please make sure कि आपका Paytm और Google Pay is logged. The digital payment applications should always remain logged, because कोई भी आपका फोन अगर आप उसने चुरा लिया, वो 2 मिनट में आपका इधर से उधर यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो मेक श्योर कि आपके डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशंस भी लॉग्ड है, and it is very easy for a person to hack into your bank account if they have your password. Next is the psychological tricks. Psychological tricks are where the attackers play with the minds of the users to trap them with lucrative offers. Once trapped, the attackers can exploit the victim by either stealing sensitive personal information or harm the victim in any other way. So this is a very new concept, psychological tricks. जो अभी आप इसके बारे में सुनोगे, phishing and wishing and smishing, these are very new terms. And phishing is the act of sending fraudulent emails that appears to form a legitimate source, for example, a bank, a recruiter of a credit card, or a company. And this is done in an attempt to gain sensitive personal information, bank account details, etc., from the victim. फिशिंग के थ्रू आपको एक रैंडम ईमेल आएगा, आपको एक बहुत ऑफिशियल एकदम फुल प्रोफेशनल लैंग्वेज होगी उसमें, आपको लगेगा ये तो लेजिट ही है, एंड यू गो ऑन विद द लिंक एंड यू गिव आउट योर डिटेल्स कि अच्छा ठीक है आपने मांगा, ये इस चीज की है। ये जॉब फ्रॉड्स में आ जाता है कि एक पर्सन ने आपको बोला कि आप घर बैठे बैठे 10,000 रुपए कमा सकते हो, बस आपको इस लिंक में जाना है और 1 घंटे आपको लॉग इन करना है और 1 घंटे लॉग इन करके आपको ये काम करना है। वो उस जॉब फ्रॉड्स के अंडर आ जाता है, एंड देन it is very easy for a person to get hold of all of your information. कभी कभी इन लिंक्स के थ्रू वो आपका फोन हैक कर लेते हैं, वो आपकी पूरी ट्रैक कर सकते हैं सिस्टम के, आपके फोन में क्या चल रहा है, आप कहाँ पे क्या चीज यूज कर रहे हो, सब पता चल जाता है।
एंड विशिंग इज सिमिलर टू फिशिंग, बस वो SMS के थ्रू होता है. It is not through an email. It is a crime that is done through calls or SMSs. तो इसके थ्रू जैसे सपोज करो आपको एक there are a lot of times when you are going and random email pops up which says ki this is a job offer, we give you a job offer for this position, you just have to click on this link and you have to give an interview, you have to tell your personal details, and then we'll initiate your job letter, and then we'll give you all the details for the salary also. एंड उस एक लिंक के थ्रू आपको नहीं पता कि वो आपका पूरा का पूरा फोन हैक कर सकता है, वो पूरा ट्रैक कर सकता है, एक उसमें ऐसा वायरस होगा कि वो आपके फोन में आ जाएगा एंड इट विल गेट गिव आउट ऑल योर इन्फॉर्मेशन, देन यू कैन डू नथिंग बिकॉज इट इज थ्रू एन ईमेल. You just have to report, and then you have to report, and this is all the process that will happen further. लॉटरी एंड जॉब फ्रॉड, पहले तो लॉटरी के बहुत होते थे, बहुत ज्यादा होते थे. अब फिर भी थोड़ा देर इज अ लिटिल, यू कैन सी, कम हो गए हैं वो, क्योंकि लॉटरी इतना कोई अभी वैसे भी नहीं मानता. बट लॉटरी के इतने आते हैं कि क्लोन वेब, किसी भी कॉल आ गया कि सर आपको लॉटरी लगी है इतने इतने हजार की, आप इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, 1,000 रुपये ट्रांसफर कर दो, फीस कर दो, और फिर उसके बाद हम आगे आपके 10,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे. फॉर दिस यू विल नो, अभी लॉटरी और जॉब फ्रॉड्स के बारे में इसका आगे आपको अमन विल टेल यू further about this, how when he'll be telling you about how to report a cybercrime. Next is the credit and debit card fraud. Again, the attacker tries to scare the victim by informing them that their credit or debit card has been blocked. And the victim becomes worried and starts panicking. The attacker takes advantage of the situation and asks for every information that they have. So there is this random call that comes to you one day कि मैम आपका जो अकाउंट है ना वो ब्लॉक हो गया है, आप हमें अपनी डिटेल्स दीजिए, हम आपको अनब्लॉक करके देंगे वो कार्ड. एंड इट इज थ्रू अ लेजिट, बोलते इट इज थ्रू अ लेजिट बैंक साइट, एंड हम आपको आपका वो दे देंगे, आप हमें अपना CV भी दे दो, आप अपना एक्सपायरी डेट, नाम और सब पिन वगैरह सब दे दो, हम आपका कार्ड अनब्लॉक करवा देंगे. और क्योंकि आप उस पैनिक में होते हो कि भाई मेरा कार्ड नहीं चल रहा, हाउ विल आई वर्क, दिस कार्ड इज नॉट वर्किंग, उस पैनिक के अंडर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन यू गिव आउट टू दैट पर्सन, एंड देन इट इज बीइंग मिसयूज्ड टू स्टील योर मनी और cause harm to the victim. So it is very easy for a person to use you and आपके अच्छाई का फायदा, आपके ट्रस्ट का फायदा उठाना. इट इज वेरी इजी फॉर अ पर्सन दीज डेज टू गेट होल्ड ऑफ इट. आपको कॉल करेंगे, आपको इस सिचुएशन में डाल देंगे कि आप कुछ रैशनली सोच ही ना पाओ, आपको ऐसे उसमें डालेंगे. जैसे आप अभी डोनेशन की साइट्स देखो कितनी वो होती है, एंड अनलेस एंड अनटिल प्लीज मेक श्योर कि अगर आप किसी चीज के लिए डोनेट कर रहे हो, अनलेस एंड अनटिल वो एक लेजिट वेबसाइट, एक लेजिट इन्फॉर्म क्या कहते हैं फाउंडेशन का है, प्लीज डोंट गो अहेड विद द डोनेशंस. इट इज अ वेरी गुड कॉज दैट यू आर डूइंग डेफिनेटली, बट प्लीज मेक द बैकग्राउंड चेक, बिकॉज आजकल कैंसर की इतनी ज्यादा वो आती है कि आप कैंसर पेशेंट्स के लिए डोनेट कर दो इतना पैसा, और वो कभी कभी बिल्कुल अनसेफ होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, और फिर वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं उस एक ट्रांजैक्शन के थ्रू. इट टेक्स ओनली वन ट्रांजैक्शन टू गेट योर इन्फॉर्मेशन आउट, just one. Next are the general tips that we have, and these are the tips of safety. Always change the default admin password on your Wi-Fi router to a strong password that is known to you only. Wi-Fi के through भी आप I'm sorry, Wi-Fi के through भी it is very easy for someone to track, hold and get the hold of your information and your situations. So please always make sure that your network is configured to the latest encryption. आप WhatsApp पे देखते होगे, वहाँ पे लिखा आता होगा कि it is verified to the latest encryption, so that also has to be there. Also जब आप किसी कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं बाहर आप किसी और के लैपटॉप में अपना ईमेल आईडी डाल रहे हो, या फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लीज मेक श्योर कि आपकी ईमेल आईडीज में 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन लगा हुआ है, आपके पासवर्ड, सोशल मीडिया पासवर्ड्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन लगा हुआ है, जहाँ पे आप लॉग इन अगर करते हो अपना पासवर्ड डालते हो, उसके बाद एक OTP आता है, and you remember you get that from your registered number, so it is easier कि for you to take hold. अगर किसी ने आपके पासवर्ड का पता लगा भी लिया तो वो नहीं उस अकाउंट में जा पाएगा unless and until they get the OTP, and you'll know that something suspicious is happening with your account. So आप रिपोर्ट भी कर सकते हो उसको before something happens. So please make sure of that. नोट द IMEI कोड ऑफ योर सेल फोन. अगर आप अपनी सेटिंग्स में जाओगे तो आपको IMEI कोड मिलेगा,
एंड प्लीज कीप इट इन अ सेफ प्लेस, ताकि अगर आपका फोन कभी भी चोरी होता है तो आप उस IMEI कोड को यूज कर सको. And then please discuss the safe internet practices and etiquettes with your friends and family. Now that we are telling you this, you are getting to know about what can happen, what are the situations that are happening these days. तो आप प्लीज इस चीज को मेक श्योर करना कि आप अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने फैमिली को बताओ, बिकॉज इट इज वेरी इजियर. हमारे पेरेंट्स को कॉल आता है कि इतना पैसा वो लॉटरी के लिए करो, एंड समटाइम्स दे डोंट थिंक एंड दे जस्ट गो ahead with it. So please make sure that they are aware of the fact that there's something like fraud sites that exist, fraud calls that exist, and please make sure they are safe from that. बिकॉज इन लोग का जो टारगेट होता है ना, ये मोस्टली मिडिल एज पीपल ही होते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं. अभी तो वी गिव दैट अटेंशन टू इट, बट मिडिल एज पीपल डोंट गिव दैट अटेंशन. तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने फैमिली के साथ डिस्कस कर रहे हो ये सब. And do not save your card or bank account details in your e-wallet, as it increases the risk of theft. If you think that you are compromised, please inform the authorities immediately. There are foundations that are working with it. There are cybercrime portal. There is police station where you can report. There is cybercrime police station as well. देर आर न्यूमरस वेज जहाँ पे आप जाके रिपोर्ट कर सकते हो क्राइम बिफोर एनीथिंग हैपेंस. अगर आपको जरा सा भी सस्पिशन हो रहा है कि आपके अकाउंट में कुछ चल रहा है, कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, प्लीज मेक श्योर कि आप उसको अथॉरिटीज को बताओ. So we've had numerous questions कि कैसे anonymously आप apply कर सकते हो, and how to protect yourself, what is the procedure. ये हमने responses में questions देखे थे. For what we have a cybercrime, for what that we have a cybercrime portal जिसकी explanation अभी आपको further अमन देगा, how to report the crime, जहाँ पे सब कुछ है, from filing the complaint to manuals and brief studies and safety tips, everything is there on that website. Other than that, there was also one question that as law students, what future do we have in cyber law? As we know, this is going to be a generation of AI in upcoming years, which will proportionally tend to increase in cases of cybercrime if not taken care safely. So अभी deepfakes का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे अभी हमने बात करी. तो how to detect deepfakes, because it's really not that easy to get hold कि भाई अभी अभी एकदम टेक्नोलॉजी आई है, आपको एकदम से नहीं पता चलेगा कि आप कैसे उसको डिफरेंशिएट कर सको. So cyber law is also comparatively has a good future in terms of practice area. I have seen that a question in one of the responses. If cyber law has a good future to practice in, then it definitely has. If you have an interest area in that, you shall go ahead with that. Next is the what is cybercrime portal. We've explained you it. You can report any of the crimes that are happening, and there are categories available there for the cyber crimes that are affecting women and children and everybody. And they have a separate portion where it is just for the women and children, because mostly उसका बहुत heavy कुछ cases होते हैं, तो उसके लिए आप कर सकते हो. Next is how does the portal works. It is you log in an ID, you make an ID, you register an ID, आपका email address आप सब डालते हो, and आपको एक complaint ID मिलती है, एक कंफर्मेशन मिलता है कि जब आप अपना वो क्या कहते हैं अपना क्राइम रिपोर्ट करते हो साइबर क्राइम पोर्टल के थ्रू, फिर वो उसको फर्दर जाके उसके ऊपर वर्क करते हैं, देन दे विल टेल यू फर्दर अबाउट इट. Now that was it for my part. Now we have Aman telling you how to file a complaint on cybercrime portal step by step. So please make sure you take notes of that. And if anybody has any question, we will take them up after the procedure is explained. Thank you very much. Aman, please take over. Yes, thank you, Niharika. I think Niharika has been very clear as to what you have to do, what cybercrime is actually is. I'll be moving forward with explaining you how to actually report cybercrime from the cybercrime portal. First, this I've developed a mock situation in which I was a victim of lottery fraud, and I'll show you what the conversation looks like in those situations. Please be with me. Yes, here we have a WhatsApp conversation between myself, that is a victim and a perpetrator, and you read the conversation here. I think the screen is visible, right? Niharika, is the screen visible to you? Could anyone tell me if the screen is visible? Yes, Aman. It is Yes, visible. Oh, okay, I'll move forward.
So on 2nd of February, that is Friday, I received a message that, "Hi Aman, this is David here. I'm writing to inform you that you have been selected as one of the lucky winners in our recent lottery draw. Congratulations, you have won a rupees 1000 rupees cash prize and we are excited to facilitate the prize claim process for you. But for that, we need some information from you. Kindly provide your full name, age, occupation, and address." So this is the message I received, and they ask for just basic information. Tell me that I have won a lottery prize of rupees 10,000. I reply, "Thank you for informing me about the lottery win. I'm grateful for the opportunity. However, I'm a bit hesitant to provide personal information upfront. Can you please provide more details about the lottery draw and how I selected as the winner?" So you see that I'm a bit doubtful here and I want more information. The perpetrator here replies, "Certainly, Aman. The lottery draw was conducted by a esteemed organization, and winners were selected through a rigorous and transparent process. Your entry was chosen randomly as one of the lucky winners, and you are entitled to claim the prize. If you are satisfied with the response, kindly provide your full name, age, occupation, and address." So you see, I'm still not sure about this explanation, and convey this to the perpetrator that I'm still not sure about this. The perpetrator replies, "Do not worry, Aman. I'm going to share my Aadhaar card with you for your verification." So you know, कपिल Aadhaar card is. मेहता मोमोज खाने आजा. Please mute yourself. I think you've unmuted yourself by mistake. Moving forward, the perpetrator sends his Aadhaar card as a point of verification for me so that I'm sure that the person who is talking with me is a genuine person. I received a Aadhaar card therein, and I verified that yes, there is a name, there is photo, there is address, and all that. I think the Aadhaar card is valid, and then I'm sure that the person is genuine. Moving forward, I see my message. "Thank you for providing your identification card for reference. I appreciate the gesture. I will review the details and get back to you with the required information from my end. However, I'm still curious about the lottery draw process and how the winners are selected. Can you please provide more insights into that?" The perpetrator replies, "Absolutely, Aman. Our lottery draw process is conducted with utmost transparency and fairness. Entries from eligible participants are collected through various channels, and winners are selected randomly through a computerized system. Each entry is assigned a unique identifier, and winners are chosen through an unbiased selection process. As a winner, you have the opportunity to claim your prize and enjoy the rewards of your luck and participation." I reply, "Thank you for explaining the lottery draw process. It's reassuring to know that the selection is conducted fairly." So you see the use of fancy words and the way they explain that this lottery is completely computerized, and they use fancy words and explain everything in detail. I now believe that the lottery is genuine. I understand that the lottery is genuine, and I thus provide the information requested, that is the name, the age, occupation, and address. I provide it to them. They reply, "Thank you for the information, Aman. We will get back to you in some time." I reply, "Okay." Then after a few hours, I receive a message, "Aman, we have verified your details. We just need your Aadhaar card for verification. After that, we are good to go." Now they ask for my Aadhaar card for my identification. And since I'm convinced that the lottery was genuine, the person is genuine having shared his Aadhaar card, I also share my Aadhaar card and send it to the person. Moving forward, the after sharing my Aadhaar card, the perpetrator replies, "Thank you, Aman, for the quick response. We are now transferring money to your bank account. Please share your bank account details." Sure, here it is. I share my bank account details as well. The person replies, "Thank you, Aman. We will transfer the money now." Then, just within a minute, he replies again, "Aman, I'm sorry, but there is a small issue with the transfer. It is demanding a minimal fee of rupees 1000 for processing the transaction, which has to be paid at your end. Could you do that? We will transfer the lottery as soon as this processing fee is cleared." So you see, the person is making a small demand of rupees 1000. He asks, if I, as soon as I will transfer the money, I will get the lottery. 1000 rupees is not a big sum in front of rupees 10,000. I reply, but still, I'm not, I get suspicious at this point, and I reply, "But I don't think there is any processing fee to receive the money, is it?" The person replies, "Yes, it is. See, here is the video of the error being shown." And thereafter, he shared a video with me showing that they are putting in rupees 10,000, putting in my bank details, they are clicking on transfer the money, and there is an error is being shown that for this transfer to occur, rupees 1000 has to be paid at the end of the receiver. So they share this video. I seeing the video, I say, "Okay, got it. But couldn't you pay it from your end and then send me rupees 9,000?" I say to the person that
मेरे 10,000 में से पे कर दो ना 1,000, क्या दिक्कत है? तो उसने रिप्लाई किया, नो वी कैन नॉट, एज विजिबल इन द वीडियो इट इज पेबल एट योर एंड ओनली, प्लीज डू इट नाउ। सो सी, उसने बोला कि वीडियो में आपको दिख ही रहा है कि आपको पे करना है, एंड आप पे करिए और जल्द अभी कर दीजिए इसको। I say that I'm still skeptical about it. The person replies, listen, Aman, if you want your lottery money, then transfer the fee now, or we will forfeit the lottery money. Decide now. The voice has changed completely. It is now commanding कि जल्दी से पैसा ट्रांसफर करो, या तो 1,000 दो, नहीं तो फिर तुम्हारे पूरे के पूरे 10,000 चले जाएंगे। 10,000 is a big sum for me. I reply, okay, okay, no issues. I'm transferring the money. Send me the details for the payment. I ask for details of payment and they send me a link. They say, click on the link and pay it. आई नो, मुझे पता है कि अब 10,000 मुझे मिलने वाले, बस 1,000 पे करना। मैं कहता हूँ ठीक है, ओके, आई मेड द पेमेंट, काइंडली चेक। मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ, उसको खोलता हूँ, पेमेंट के लिए आते हैं 1,000, मैं उसमें डिटेल्स डालता हूँ, बैंकिंग डिटेल्स, अपना यूपीआई, जैसे भी मुझे पे करना है मैं वो डिटेल्स डालता हूँ, पेमेंट हो जाता है। आई गेट द कंफर्मेशन कि पेमेंट हैज बिन मेड। मैं उसको रिप्लाई करता हूँ कि पेमेंट मिल गया, आप चेक कर लीजिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ही ब्लॉक्ड मी। there's no contact. I've continuously messaged, hey, where are you? Why aren't you replying? I've transferred the processing fee. Why haven't I received from your money? Yesterday I replied, please return my 1K. I do not want the lottery. See, the person has blocked me. I do not have anything to do. The number I'm trying to call, it is going unreachable. It is non-existent. Things like that. इसने व्हाट्सएप पे मुझे ब्लॉक कर दिया। अब मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में? मेरे 1,000 तो चले गए। नाउ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू टेल मी कि अब मुझे क्या करना चाहिए इसमें? यस ध्रुव, गो अहेड। So, good evening. I would rather suggest that it would be better for you to directly report to the cybercrime, as they might able to track the location via the maybe the site access they can get, or they can directly get the information for the contact number. Yes, correct. Correct, Dhruv. I'll go to the cybercrime portal. Let's go to the cybercrime portal then. I'll open the cybercrime portal. Cybercrime.gov.in. This is the portal. I'll open it. This is how the website looks like. It's loading. Herein, I'll go down. Herein, there are three options to report the cybercrime. First is women and children related crime. In this, those wherein the women and children have been the victim, these are reported. For example, sextortion. For example, phishing. For example, nudity related cases wherein women and children have been the victim. For example, child pornography. Herein, I have two options to report the crime. First is report anonymously, when I won't share my personal information that I am the reporting it. Another is regular register and track, where I'll share my information as well. Second is financial fraud, wherein I'll put in the financial fraud when I have lost my money, or have or was going to risk my money, or this other person was trying to commit a financial fraud. In these situations, I'll report a financial fraud. And there is other cybercrime cases. I'll go to the other cybercrime, because from this, all other cases can also be filed. So this will be easier for you to understand. I'll click on register a complaint, then opens a filing a complaint on National Cybercrime Portal, introduces the website and all that. I'll click on file a complaint, filing a complaint on National Cybercrime Portal. So it is stating the terms and conditions. I'll accept. Moving forward, herein I'll click here for new user. Herein I have to fill in the details, select state, login ID, mobile number, OTP, and capture. Then I'll submit. I'll create a user ID. For convenience this time, as you all of you know how to register, I'll click on existing user, because it will be easier to demonstrate here. And I'll use my already existing ID for demonstration purposes. Before logging in, there is mandatory information before filing your complaint. First of all, it is saying that I should be ready with incident date and time. Do I have the incident date and time? Yes. It is 2nd of February around 7 p.m. as was visible here. It is Friday, 2nd of February around 7 p.m. 7:06. Then it's asking incident details, minimum 200 characters without any special characters. So I'll have to prepare an incident detail. Could anyone if would like to volunteer and prepare an incident detail for me? Anybody? If you could jot down the points as to what has happened in this, just the points, not a paragraph I'm asking.
कि क्या क्या हुआ इस कन्वर्सेशन में, क्या क्या क्राइम कमिट करने का कोशिश किया गया, इफ यू कुड। ध्रुव, यू कैन गो फॉरवर्ड। So in this we can mention the key points like this. What do we say? Like the ch- cycle, ch- sec, ch- 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 Your voice is breaking, ध्रुव. ch- ch- Dhruv, please ch- rejoin. I think you have an unstable internet. Yes, Prajwal, you're saying something? I'm not able to hear you. Please write in the comment box. Moving forward, I'll show you what, like I've already written, prepared one for your convenience. I'll show you the conversation which I'll be writing incident details herein. You can read the conversation that I'll write there. I received a WhatsApp message on 2nd February from the said number. It claimed that I had won a lottery of rupees 10,000 and they wanted my name, age, occupation, and address for verification. Initially, I thought this cannot be true, so I inquired further about the lottery process and how I came to be winning it. The perpetrator thereafter shared his Aadhaar card and other details which convinced me about the genuineness of the lottery. Hence, I became comfortable and shared all the details, that is name, age, occupation, address, and bank account details along with my Aadhaar card. After a few hours, they messaged me that the transfer of lottery money requires a prior payment of rupees 1000. Again, I got suspicious a bit, but they shared a video of they trying to make the transfer and error being shown, and that gave me confidence. I thereafter made the payment on a link shared by them. After they did not reply, I now know what damage had been done. I have therefore reported here to get back the 1000 rupees which I paid. Furthermore, I believe that the payment link must be suspicious and they must be having all my online banking details, which is far more dangerous than just these 1000 rupees. Please help me as soon as possible. If we act late, I might lose lakhs and lakhs of rupees. I've attached the screenshot of the conversation for your perusal. Please act fast. So I've prepared the incident details. Now, any other mandatory information? Yes, soft copy of any national ID that I already have in JPG for in PDF or JPG format. It could be voter ID, a driving license, passport, PAN card, Aadhaar card, etc. Now, in case of financial fraud, I also have I'm a victim of financial fraud here. I'll look into this as well. Name of the bank, wallet, or merchant in which I paid. Dual digit transaction ID, that is unique transaction ID, which is given for each transaction. I use that as well because I have that when I made the payment. Date of the transaction, I have that 2nd of February. Fraud amount, that is 1000 rupees. Soft copy of all the relevant evidences related to cybercrime. So I'll support evidences like payment screenshot if I have, और या फिर बैंक अकाउंट का जो डिटेल्स में से निकाल के मैं दिखा दूंगा कि इस बैंक से इतना पैसे कटे हैं, and the WhatsApp conversation I'll share. Well, I'll log in front of you and show how it will actually be हेलो done. सर। हाँ, yes, सर डू यू थिंक वो इतना कंसर्न होंगे मतलब हमारे 1,000 रुपए के लिए साइबर सिक्योरिटी वाले? that is their duty. साइबर क्राइम बना ही इसलिए 1000 रुपीज हो या 10 रुपीज हो. अगर 1000 रुपीज कटा है, कल जाके वो 1 लाख रुपीज भी कट सकता है. दे हैव टू फाइंड द परपिट्रेटर. इट इज लॉ में ये नहीं देखा जाता कि क्राइम कितना छोटा है. जब साइबर क्राइम होता है, जितने छोटे अमाउंट का भी हो, वो होता है. जैसे यहाँ पे तो बस तुमको 1000 रुपीज दिखा, लेकिन तुमको बाद का दो चीज और नहीं दिखा. फर्स्ट चीज ये कि मैंने उस लिंक पे क्लिक करा था, जिसकी वजह से हो सकता है मेरा फोन हैक हो गया हो. तीसरा चीज ये तुमको नहीं दिखा कि जब मैंने उसको बैंक अकाउंट डिटेल्स दिया और जब लिंक पे पेमेंट किया, तो उसको मेरे पास बैंक अकाउंट डिटेल्स प्लस पासवर्ड्स दोनों उसके पास आ चुके हैं. तो बस मेरे 1000 रुपीज नहीं गए, मेरा हो सकता है फोन भी हैक हो गया हो, एंड डेफिनेटली मेरे बैंकिंग डिटेल्स और पासवर्ड्स वगैरह भी उसको अब पता है. सो वी नीड टू रिपोर्ट एवरी क्राइम. अगर तुम बस 1000 रुपीज सोच के रिपोर्ट नहीं करोगे, कल को हो सकता है वो किसी और से 1 लाख रुपीज छागले सेम मैनर में. उस समय कौन कौन मना करेगा, किसको किसको मना करेगा. So we have to report it, and it is their duty to share or take action on every crime that is reported in the cybercrime portal. Yes, Madhur, you're saying something. थैंक यू सर। Welcome. Sir, I want to ask two questions. First is, how much time will they take to complete the action? And my second question will be, the link which they have given is suspicious already. So the antivirus which we have already installed in our laptop,
or mobile phones, won't that warn us before? आई माइट बी लाइक मैंने ये कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम जो लगता है इसका अराउंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम लाइक मैंने जब फाइल किया तो उसमें 1 to 2 months लगा था उसको प्रोसेस होने में। लेकिन वही है, जितना ज्यादा हम इंफॉर्मेशन देंगे उतने जल्दी वो चीज होगा। जितना ज्यादा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन रहेगा, जैसे सब कुछ उसका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, सारा चीज जितना डिटेल में हम लोग प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा चांसेस होता है केस जल्दी सॉल्व होने का। एंड सेकेंड थिंग जो तुमने बोला कि अबाउट सस्पिशियस लिंक, तो सस्पिशियस लिंक हो सकता है मेरे फोन को हैक नहीं किया हो, लेकिन हो सकता है सस्पिशियस लिंक पे जो मैंने डिटेल्स वगैरह बैंक अकाउंट डिटेल्स डाला है उसके पास सेव हो गया हो सामने वाली पार्टी के पास। तो दोनों सिचुएशन हो सकता है यहाँ पे। ओके, आई थिंक आई हैव Thank you आंसर्ड so योर क्वेश्चन मधुर। yes, thank you. Moving forward, I'll show you how to log in on the cybercrime portal. I'll put in my login ID, which I already have. वेबसाइट दिक्कत कर रहा है अभी, but I'll retry it. Otherwise, I'll show you another way. हाँ, वेबसाइट अभी फंस रही है, तो फिर यहाँ पे बस ये लॉगिन आईडी, मोबाइल नंबर, ओटीपी एंड कैप्चा डालने पे, सबमिट करने पे एक पेज खुलेगा। आई शो यू द पेज विट इट विल ओपन हियर इन। This page will open. First of all, it asks for personal details to be fulfilled. This is my already account. I had reported cybercrime through this portal back in 2020. So this account is already functional. So वहाँ पे जब नया आईडी आप रजिस्टर करेंगे ना, तो रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जब आप खोलेंगे तो आपको आएगा कि कंप्लेनेंट का डिटेल्स डालने के लिए। वहाँ पे आपको कंप्लेनेंट के डिटेल्स डालने होंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पे रिपोर्ट साइबर क्राइम पे आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आस्क फॉर कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी आ रहे हैं। आई एक्सप्लेन यू कैटेगरीज वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑनलाइन सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम। इसमें क्या होता है कि सोशल मीडिया यूज करके, इंटरनेट यूज करके कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल साइबर बोलिंग, ऑनलाइन हरासमेंट, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सब होता है। सेकेंड इज फाइनेंशियल फ्रॉड, जिसमें आपका कुछ डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस यूज करके मनी स्टील किया जाता है, सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टील किया जाता है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल फिशिंग ईमेल आ सकता है या फिर लॉटरी का कुछ आ सकता है, ये सब। थर्ड इज हैकिंग और डैमेज टू कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम। इसमें कुछ वायरस वगैरह भेज के आपके फोन में या लिंक वगैरह के थ्रू आपके फोन को हैक किया जा सकता है, किया हो गया है। और नेक्स्ट इज साइबर ट्रैफिकिंग, जिसमें क्या होता है कि इलीगल ट्रेड और ट्रैफिकिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। सो इसका यूज जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एडवर्टीजमेंट्स ऑन डार्क वेब मार्केट प्लेसेस, ये सब होता है। नेक्स्ट इज ऑनलाइन गैम्बलिंग या बेटिंग। इसमें आपका हो सकता है कुछ बेट्स वगैरह आपने प्लेस किए हो, उसमें कुछ अ, गलत हुआ आपके साथ, ऐसा कुछ बेटिंग वगैरह जहाँ पे हुआ हो। रैंसमवेयर है, जिसमें मैलिशियस सॉफ्टवेयर वगैरह आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया, किसी ने कर दिया हो किसी तरीके से। नेक्स्ट इज क्रिप्टो करेंसी क्राइम, जिसमें क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन, एथेरम वगैरह यूज करके कुछ इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म किया होगा। नेक्स्ट है साइबर टेररिज्म, इसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करके डिसरप्शन, फियर, हार्म, आइडियोलॉजिकल पर, ये सब चीज करके कुछ साइबर टेररिज्म, टेररिज्म थ्रू कंप्यूटर मीन्स किया गया हो। हमारा इसमें आएगा ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, बिकॉज हमारा यहाँ पे मनी लूज हुआ है, यहाँ पे लॉटरी के थ्रू पैसे ऐंठने के लिए कोशिश किया गया था। तो दिस इज ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। Moving, clicking on online financial fraud, it will ask for, it has logged me out. I'll log in again. Wait, the website is malfunctioning. थोड़ा दिक्कत होता है गवर्नमेंट वेबसाइट से गाइस, can't do anything about this.
ये अकाउंट लॉगिन हो गया, सो आई विल बी एबल टू शो यू एक्चुअली कैसे होता है होपफुली। तो मैं स्क्रैपशॉट डाल दूँ 763G6A। लॉगिन हो जाइए। यस, वी हैव लॉग्ड इन। अब देखो, जब नया अकाउंट लॉगिन करोगे ना, तो इसमें ऐसे आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर प्रोफाइल डिटेल्स पूछेगा सबसे पहले। सो लॉगिन आईडी मैंने डाला हुआ है, लॉगिन आईडी आ गया यहाँ पे। यहाँ पे फिर टाइटल पूछ रहा है, यू कैन पुट इन एनीथिंग एज रिक्वायर्ड। यहाँ पे मैं मिस्टर डालूंगा, आई पुट इन माई नेम। कंप्लेनेंट का डिटेल्स डालना है यहाँ पे। मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ में डाल दे तो नेसेसरी है इसे डालना बिकॉज दिख रहा है वो। आई पुट इन अ रैंडम डेट ऑफ बर्थ and it's asking for gender. I'll write male. You have all the three options: male, female, and transgender. You can choose as per your requirement. I'll put in the mail ID. That is the same as login ID mine. 3 Naksh. यहाँ पे फादर मदर या स्पाउस का नेम भी डालना जरूरी है। यू कैन पुट इन एनी वन एज यू फील लाइक। यहाँ पे मैं रैंडम डाल देता हूँ। मूविंग फॉरवर्ड इट इज आस्किंग फॉर माई प्रेजेंट एड्रेस। ये सब डाल सकते हैं, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, कॉलोनी, विलेज, टाउन, सिटी, तहसील, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट। इसमें जितना ज़्यादा आप डिटेल्स डालेंगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो ट्राई टू पुट इन एज मच डिटेल्स एज रिक्वायर्ड। मैं बस डेमोन्स्ट्रेशन की जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो बस डाल रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट में डाल देता हूँ नॉर्थ ईस्ट। पुलिस स्टेशन में डाल देता हूँ यहाँ पे दयालपुर। जो एक्चुअल डिटेल्स है वही सब आप डालें। ट्राई टू बी एज मच एक्यूरेट एज यू कैन बिकॉज ये सब यूज होगा आपके डिटेल्स फुलफिल करने में, जो कि क्विज को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा फुलफिल होगा जितना अच्छा से डिटेल्स आप डालेंगे। मूविंग फॉरवर्ड आई सेव एंड कंटिन्यू। आ गया। नाउ आई क्लिक ऑन रिपोर्ट साइबर क्राइम। स्टार्टिंग दिस कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। इसमें सब कैटेगरी में आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आपको पता होगा कि बहुत सारे आधार सेंटर्स रखे गए जहाँ पे आप फिंगरप्रिंट से आधार के थ्रू पेमेंट निकाल सकते, पैसे निकाल सकते। तो वो है। बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज या ईमेल टेक ओवर। किसी बिजनेस का ईमेल किसी ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, हैक हो गया है। डेबिट कार्ड फ्रॉड हुआ है, या सिम स्वैप जो आपको निहारिका ने एक्सप्लेन किया था, स्किमिंग वगैरह हो गया, डेबिट कार्ड या स्वैप हो गया, किसी और ने कर दिया है। डीमॉट या डिपॉजिटरी फ्रॉड जो आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए डीमैट अकाउंट यूज करते हैं। फिर ई वॉलेट रिलेटेड फ्रॉड, फॉर एग्जांपल आपका पेटीएम है, गूगल पे, ये सबके ई वॉलेट में जो आपके ट्रांजैक्शन होते हैं उसके थ्रू कुछ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड कॉल या विशिंग, या फिर इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड, यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड। वुड एनीवन वुड लाइक टू टेल मी यहाँ पे सब कैटेगरी अपना कौन सा होगा? फ्रॉड कॉल हो गए, इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड होगा, इसमें बता दो। It's a fraud call. Yes, right. It's a fraud call. Move forward. Have you lost any money? Yes, I've lost the money. I'll click on yes. Herein, it is asking for victim account details. I have to put in my account details कि जहाँ से transaction हुआ है, जिस account से. I'll put in a random bank account. It is asking for my account number. I'll put in a random account number. Is asking for 12-digit UTR number or transaction ID. I'll put in a transaction ID. That's also random for um, it's 12. Amount lost is 1000 rupees. Transaction date is 2nd of February. All right. Time was, what was the time? Let me see. Conversation कब मैंने payment कब किया? I've made the payment 7/12 में. I'll put in 7/12. Time 7 minutes 11 कर देता हूँ, उसमें पेमेंट किया होगा। एंड यहाँ पे PM रेफरेंस नंबर वगैरह ये सब है, ये सब डाल के सेव करना है। उसके बाद ये मैं हटा देता हूँ, मैंने पहले किया था। यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी है, अकाउंट नंबर है, 2 तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ, 1000 लॉस्ट हुए इन फ्रॉड कॉलर विशिंग आदर्श कोऑपरेटिव बैंक। एग्जाम्पल पर्पज के लिए है।
गोइंग फॉरवर्ड, डू हैव यू हैव सस्पेक्ट अकाउंट डिटेल्स। मेरे पास नहीं था, उसने तो कुछ अकाउंट डिटेल्स अपना भेजा नहीं था, मेरे पास वो नहीं है, तो नो रहेगा। अगर येस मैं करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर सस्पेक्ट का अकाउंट डिटेल्स मानेगा। मनी ट्रांसफर कैसे हुआ था, बैंक, वॉलेट, मर्चेंट, फिर कौन से बैंक से हुआ, तो कौन से बैंक से, अगर वॉलेट से हुआ था तो कौन से वॉलेट से हुआ था, ये सब ऑप्शन आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट, जो जो डिटेल्स आपके पास है वो सब आप इसमें डाल सकते हैं। क्लिक ऑन नो, बिकॉज ये सब मेरे पास तो है नहीं, उसने तो ये सब भेजा नहीं था, बस लिंक भेजा था जिसमें मुझे ट्रांसफर करना था। Then it is asking for approximated date and time of incident और receiving और viewing of content। तो मेरे पास मैसेज कब आया था, 2 तारीख को आया था। टाइम, फर्स्ट मैसेज उसका कब आया था, उसके हिसाब से मैं डालूंगा यहाँ पे। फर्स्ट मैसेज उसका आया था 6:58, 7 o'clock के अराउंड आया था। मैं 7 डाल देता हूँ यहाँ पे, पीएम था। फिर इज देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग, डिले नहीं है, 2 दिन बाद ही मैं रिपोर्ट कर दे रहा हूँ। वेयर डिड द इंसिडेंट अकर, बहुत सारे ऑप्शन, ईमेल पे हुआ, फेसबुक पे हुआ, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, व्हाट्सएप, वेबसाइट यूआरएल, यूट्यूब, लिंक्डइन, टेलीग्राम, मोबाइल ऐप, अदर। मेरे साथ व्हाट्सएप पे हुआ, आई सेलेक्ट व्हाट्सएप। अब यहाँ पे मांग रहा है सस्पेक्ट व्हाट्सएप नंबर एंड सपोर्टिंग एविडेंस। सिंस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए मेरे पास दूसरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मतलब कि आई कैनॉट शेयर माई व्हाट्सएप नंबर, सो आई क्लिक ऑन अदर एंड देन अदर मीडिया, आई राइट व्हाट्सएप। आपको लेकिन व्हाट्सएप वहाँ पे डालना है, और फिर जो विक्टिम है, उस परपिट्रेटर है, उसका डालना है आपको व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे। फॉरवर्ड सपोर्टिंग एविडेंस मांग रहा है। मैं यहाँ पे अब देखो, मैंने सपोर्टिंग एविडेंस रेडी करके रखा है, यहाँ पे मेरा स्क्रीनशॉट रेडी है जो मैंने किया था। साथ में इसके साथ में ट्रांजैक्शन का भी लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, वो मेरे पास रेडी है। स्क्रीनशॉट ये रहा, मैंने अपलोड किया, ऐड किया, ऐड हो गया, स्क्रीनशॉट ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इंसिडेंट डिटेल्स मुझे डालना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। सो मैंने दिखाया था कन्वर्सेशन मैंने प्रिपेयर करके रखा है इंसिडेंट डिटेल्स का, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, पहले से रेडी था, मैंने इसलिए रखा था ताकि यहाँ पे तुरंत हो जाए काम। यहाँ पे देखो 1499 1500 कैरेक्टर्स तक ही डाल सकते हैं, मिनिमम 200 एंड मैक्सिमम 1500। मैं डालता हूँ, मेरा कितना आ रहा है, 1500 से कम है, इट विल वर्क। आगे मैं जाता हूँ, सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट। अब मांग रहा है सस्पेक्ट डिटेल्स। इसमें एक ये चीज है कि आई वुड लाइक द इन्फॉर्मेशन अबाउट सस्पेक्टेड क्रिमिनल एक्टिविटी प्रोवाइडेड बाय मी शेयर्ड विद ऑल द एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम। सो ये क्लिक रहेगा, अच्छी चीज है, ज्यादा से ज्यादा शेयर होगा, ज्यादा से ज्यादा एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी तो अच्छा ही है। मूविंग फॉरवर्ड, क्या यहाँ पे सस्पेक्ट का नेम, आई सेलेक्ट एंड नेम वगैरह मेरे पास है, मेरे पास नेम तो नहीं है मेरे पास, हाँ आधार कार्ड में उसका नेम था, नेम मैं डाल सकता हूँ, उसका मेरे पास आधार कार्ड है वो मैं डाल सकता हूँ। यहाँ पे आधार कार्ड का वैसे ऑप्शन नहीं है, गवर्नमेंट इशूड कार्ड डाल सकते हैं, अदर में डाल के आधार कार्ड यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। फिर फोटोग्राफ हो सस्पेक्ट का तो वो डाल सकता हूँ, एड्रेस हो सस्पेक्ट का तो मैं एड्रेस भी डाल सकता हूँ, यस करके यहाँ पे जो जो डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल है वो सब मैं डाल सकता हूँ, आधार कार्ड के थ्रू मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये सब आप कर सकते हैं, मैं बता दिया हूँ, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब कंप्लेनेंट डिटेल्स यहाँ पे मैंने डाल दिया था, प्रोफाइल क्रिएट करते समय मैंने जो जो डिटेल्स डाला था यहाँ पे आ रहा है, अमन, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नेम, ईमेल आईडी, मेरा जो डिटेल्स है, हाउस नंबर वगैरह, ये सब पूछ रहा है, ये सब भी आ गया है, पहले मैंने डाला था वही वहां से आ गया है। फिर रिलेशनशिप विद विक्टिम, आप खुद के लिए भी कर सकते हैं, इन सब लोगों के लिए भी कर सकते हैं आप फ्रेंड, सिस्टर, नेबर, लैंडलॉर्ड, फादर, मदर, गार्जियन, हस्बैंड, वाइफ, डिस्टेंट रिलेटिव, सन, डॉटर, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इन सब के लिए आप फाइल कर सकते हैं। मैं यहाँ खुद अपने लिए फाइल कर रहा हूँ, आई क्लिक ऑन सेल्फ, प्लीज अपलोड एनी नेशनल आईडी ऑफ विक्टिम। मैं यहाँ पे अपनी आईडी अपलोड करूंगा, एक सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट ही कर दे रहा हूँ। अपलोड कर दिया मैंने अपनी आईडी, आई क्लिक ऑन सेव एंड प्रीव्यू। अब आ गया ये फाइनल डिटेल्स, आप रीचेक कर लीजिए क्या क्या हुआ। कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है। विक्टिम अकाउंट डिटेल्स मैंने डाला, ठीक है। फिर अप्रोक्सीमेटेड डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, 2 तारीख को हुआ था, 7 o'clock हुआ था, पीएम हुआ था। इज देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग, नो। सपोर्टिंग एविडेंस मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया, व्हाट्सएप के थ्रू हुआ था, एविडेंस डाल दिया। मेरा यहाँ पे डिटेल्स दिख रहा है, जो मैंने इंसिडेंट डिटेल्स समझाया था वो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। सस्पेक्ट डिटेल्स नहीं है, जो सस्पेक्ट एड्रेस नहीं है, कंप्लेनेंट के डिटेल्स यहाँ पे हैं, कंप्लेनेंट के एड्रेस यहाँ पे हैं,
and I certify that the information provided above is correct to the best of my knowledge and belief. यहाँ पे मैं आई एग्री करूंगा एंड विल क्लिक ऑन confirm and submit. Since this is for demonstration purpose, I not click confirm and submit and rather show you कि यहाँ पे confirm and submit करने के बाद क्या होता है. confirm and submit करने के बाद आपके पास ये एक पीडीएफ जनरेट होता है. आप पीडीएफ जनरेट करके डाउनलोड करके रख लीजिए, जिसमें साइबर क्राइम कंप्लेंट आ जाएगा. इसमें आपको दिखेगा एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, कंप्लेंट टाइप मिलेगा, कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट, सब कैटेगरी, हैव यू लॉस्ट मनी, ये सारा डिटेल्स जो आपने अभी फिल किया है वो सब आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में जनरेट होके मिल जाएगा फॉर योर रेफरेंस पर्पस एंड फ्यूचर ट्रैकिंग वगैरह के लिए. ये सब अपलोडेड फाइल वगैरह ये सब कुछ आपको दिख जाएगा. विल शेयर दिस पीडीएफ फॉर यू. ये साइबर क्राइम पोर्टल पे अवेलेबल है. इस पूरा पीडीएफ जो साइबर क्राइम पोर्टल को पूरा एक्सप्लेन करता है, ये पीडीएफ हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे फॉर योर रेफरेंस पर्पसेस. तो ये हो गया. अब ये सबमिट हो जाएगा. उसके बाद ये क्या होगा कि ये आप जाएगा, फिर लोकल पुलिस स्टेशन को असाइन होता है. ये लोकल पुलिस स्टेशन आके वेरीफाई करता है, विक्टिम से मिलता है, समझता है सारी चीजें फेस टू फेस, एंड फिर इसके बाद आगे की प्रोसेसिंग इसमें होती है. ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर था पूरा. इज देयर एनी डाउट्स नाउ? Aman, there are some doubts in the message section. Please open that and answer some. अच्छा, okay, I'll do that. We'll be sharing the feedback link in the end of the session. Please wait till the Q&A session is done. Hi Niharika ma'am, can you please tell how to deal with a digital fraud? डिजिटल फ्रॉड एक तो सबसे पहले निहारिका ने जैसे बताया कि वेरीफाई करिए, वेरीफाई एंड री वेरीफाई. तो ये आपको सामने से मैसेज कर रहा है पैसे के लिए, कोई भी ऐसे आपको मैसेज के लिए पैसे के लिए मैसेज कर रहा है, तो वेरीफाई एंड री वेरीफाई. फोन करो, कॉल करो, उससे मिल के पहले पूछो, फेस टू फेस वेरीफाई करो कि हाँ वो बंदा सच में वही है कि नहीं जो पैसे मांग रहा है. और अगर आपने गलती से उसको पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो फिर तुरंत उसको जाके रिपोर्ट करिए, आइदर टू पुलिस स्टेशन और द साइबर क्राइम पोर्टल और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पे. जितना जल्दी, जितना डिटेल में आप सब कुछ करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा. एंड इफ वी कमेंट इन डायरेक्ट वे, आई डू नॉट अंडरस्टैंड कपिल व्हाट यू मेंट हियर. एंड Kapil, could you please re-ask your question? What did you wanted to ask? Kapil, are you here? I think Kapil is not here. Saloni, yes, you have raised your hand. Is there a question? Hello, sir. Am I audible? Yes, Saloni, you're audible. Sir, my question is, what about poor people who don't know about cyber crimes and teenagers who using the technology or social media and don't know about the consequence of the social media crimes? So how can they file the complaint? Because several times उनके साथ crimes होते हैं, but they are not aware about it. और अगर वो होते भी है तो उनको ये नहीं पता कि उसके आगे वो करे तो करे क्या. और if you can see, India is now rising in the technology, and also the cybercrime is also increasing rapidly. So, don't you think so? We need a more stronger laws or strictly implementation. It's a high time. Okay. Saloni, first of all, जो लोग नहीं जानते इसके बारे में, फॉर एग्जाम्पल पुअर पीपल एंड दोज हु डू नॉट नो मच अबाउट साइबर क्राइम, उनके लिए तो ये वेबिनार है. दिस वेबिनार इज फॉर देम ओनली. हम लोग जो कर रहे हैं वो अवेयरनेस ही कर रहे हैं. वी हैव नक्श फाउंडेशन इस पे काम कर रहा है, साइबर शील्ड प्रोजेक्ट काम कर रहा है इस पे. वी हैव डिफरेंट अदर एनजीओज, नेक मिशन फाउंडेशन है, और भी साइबर पीस कॉप्स हैं, और भी बहुत सारे एनजीओज है जो अवेयरनेस फैला रहे हैं, जो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं. तुम देखो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह भी आते हैं, गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि आप लोग इसको पढ़िए. अगर एडवर्टीजमेंट जब कोई आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई नाम के हिसाब से आप एडवर्टीजमेंट देखिए उसको कि क्या है इसका. देखिए सोल्यूशन ये है कि अवेयरनेस तो हम लोग फैला ही रहे, गवर्नमेंट भी कर रहा है. आज गवर्नमेंट इतना सारा एडवर्टीजमेंट्स लाता है साइबर क्राइम के ऊपर, आपको इंटरनेट वगैरह पे रेगुलर मेल्स वगैरह भेजता है, एसएमएस करता है कि साइबर क्राइम ऐसे हो रहा है आजकल. सो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा. इफ यू आर यूजिंग द इंटरनेट यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आप कुछ यूज कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्सिबल होना होगा इस केस में. बाकी अवेयरनेस के लिए, बाकी इंफॉर्मेशन के लिए, हेल्प करने के लिए है, एनजीओज हैं ही. आज आप नॉर्मल पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट कर दीजिए ना जो आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है. गवर्नमेंट तो आपको हर तरह से हेल्प कर रही है. बस ऐसा थोड़ी कि साइबर क्राइम पोर्टल पे ही करना है. आप पुलिस स्टेशन जाइए, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाइए, साइबर क्राइम पोर्टल पे जाइए, आपके पास एनजीओज हैं, वेरियस हेल्प अवेलेबल. आप हेल्प करिए. आपको आगे आना होगा, आपको पहले बताना होगा कि साइबर क्राइम हुआ है या आपने फाइनेंशियल
लॉस हुआ है। अब जैसे कि ये 1000 रुपीज लॉस था, अगर मैं ये सोचता कि 1000 रुपीज ही तो है, रहने दो, कुछ नहीं होता, लेकिन आज ये 1000 रुपीज कल 1 लाख में ट्रांसफर हो सकता है। सो आई हैव टू डू इट। लाइक, एंड रही बात लॉस की, तो लॉस तो हमेशा इवॉल्व होते ही रहेंगे। आज नया चीज रोज कुछ ना कुछ नया होते रहता है। आज जैसे निहारिका ने बताया डीप फेक्स के ऊपर, डीप फेक्स इज अ रिसेंट फेनोमेनन। आज 1-2 महीने से मैं भी देख रहा हूँ डीप फेक्स के वजह के। लेकिन ना जल्दी लॉ तो बहुत तुरंत नहीं आ पाता ना। लॉ को लाने में टाइम लगता है, पार्लियामेंट में बिल आता है, लॉ बनता है, उसके बाद बहुत टाइम लगता है। लॉ आ रहा है, लॉ भी इवॉल्विंग है। डेटा प्रोटेक्शन बिल आज आ गया है, 2023 में डेटा प्रोटेक्शन बिल आ गया है। लेकिन उसको अवेयरनेस में, उसको लोएस्ट स्ट्राटा तक पहुंचने में टाइम लगेगा। एंड उसके लिए, उस स्ट्राटा तक पहुंचाने के लिए, कि वो उसके लिए हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, दिस प्रोग्राम, दिस और भी फ्यूचर में जो प्रोग्राम्स होंगे इसी चीज के लिए, कि हम लोग अवेयरनेस फैला सके लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकें इस चीज के बारे में। थिंक आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Thank, Okay, sir. Thank you. thank वेलकम। you, Aman. Now I'll take the questions. We'll start with the Q&A session. So I see the in-call messages where we see one question where they ask that if there are any how effective is cyber complaint as a remedy against e-commerce transactions. There are instances like fake products or even no products received when purchasing through e-commerce platforms. So when you are purchasing through e-commerce platforms, तो वहाँ पे उनका एक जब आप ट्रांजैक्शन करते हो और जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, जब कोई फेक प्रोडक्ट आता है या कोई भी प्रोडक्ट नहीं आता, तो आपको ना उन्हीं वेबसाइट, सपोज करो आपने फ्लिपकार्ट से या आपने अमेज़न से कुछ मँगवाया और वो एक फेक प्रोडक्ट आया या कोई भी प्रोडक्ट नहीं आया, तो आपको पहले उन्हीं के वेबसाइट के थ्रू, उन्हीं के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आपको उनका वो करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कैसे हुआ दैट यू डिडन्ट रिसीव एनी प्रोडक्ट और द प्रोडक्ट वाज़ फेक। तो वो फिर उसके बाद आपको पुट आउट करना पड़ेगा एग्जैक्टली टू द अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म। उनके हेल्प सेंटर के थ्रू, उनके कस्टमर सपोर्ट के थ्रू आपको इसमें कंप्लेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इफ दे डोंट टेक एनी एक्शन, देन उसके बाद यू कैन गो फॉर साइबर क्राइम पोर्टल पे जैसे था, आप वहाँ पे जाके भी कंप्लेंट कर सकते हैं। बट फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज दैट यू हैव टू टेक डायरेक्टली आस्क द प्लेटफॉर्म वेयर यू हैव परचेज, फ्रॉम वेयर यू हैव परचेज्ड, अमेज़न और फ्लिपकार्ट, उनका कस्टमर सपोर्ट होता है, आपको वहाँ के थ्रू करना पड़ेगा। और अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं विच इज़ सूटेबल टू योर सिचुएशन, तब उसके बाद यू कैन गो अहेड विद द साइबर क्राइम पोर्टल। I hope I answered the question. If you have any doubts further, I'd like to add on to this that फेक प्रोडक्ट्स के लिए आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम है, उसमें आप फेक प्रोडक्ट्स के लिए कंज्यूमर फोरम है, स्पेशली डिजाइंड है फॉर कंज्यूमर रिलेटेड एक्टिविटीज। उसमें आप कंज्यूमर फोरम में आप कंप्लेन कर सकते हैं। कंज्यूमर फोरम की भी ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह है, उसके लिए हम लोग वेबिनार कर सकते हैं बाद में, एंड वी एक्सप्लेन यू हाउ टू डू दैट। exactly. So when such situations occur, जहाँ पे आपका e-commerce transaction में कुछ आता है या आप किसी वेबसाइट के थ्रू, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर टू दैट एक्चुअली, दैट हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ फेक वेबसाइट व्हाइल बाइंग टू अवॉइड अ डेटा ब्रीच। सपोज आपने एक वेबसाइट के थ्रू कुछ शॉप किया और वो वेबसाइट ने आपका पैसा ले लिया और कुछ उन्होंने वो प्रोडक्ट नहीं भेजा, तो आप उसको कंज्यूमर कोर्ट में भी लेके जा सकते हो, सिंस इट इज ऑल्सो आपके कंज्यूमर राइट्स वायलेट हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन की बात आप कर रहे हो, जो फर्स्ट स्टेप होगा दैट विल ऑलवेज बी गोइंग टू द प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर यू गिवन द टेकन द products, and then further consumer court or cybercrime portal is your option. Do we have any other questions or any doubts? Yes, Laveen, please unmute yourself. Yeah, good evening, everyone. And I myself have been a victim of the parcel fraud, and I discussed with this with Rishabh. So that's why I joined this community, and it's a great initiative that Naksh Foundation has taken up. I just wanted to ask one thing that जो इसका साइबर क्राइम का there is a helpline number, right? I think it's 1930. So if we call on that, so is it like उस पे action लेते हैं वो? I'm not sure.
do you want to like add something to it, please? कि अगर हम helpline पे, because sometimes if we don't have access to internet, or if there is, as we just saw in the demo also, कि कई बार government की site doesn't work and it takes hours to file the complaint. If you don't have access to the even to the police station nearby, because at times ये होता है कि if we go to a normal police station, they straight away say that कि हम we are not writing down the complaint since it is not our मतलब हमारा डिपार्टमेंट का नहीं है, it's cyber crime है, so you need to go to the cyber crime police station. So this if this case happens, like if we don't have access to the cybercrime police station where we can go physically and file the complaint, or if we don't have access to the internet, so उसमें can we like will this help, this helpline number? Ma'am, Lovely. Uh, yes, Niharika, go ahead. yeah, I'll just say that if there is a lot of money that has went अगर बहुत ज़्यादा पैसे गए हैं तो साइबर हम्म पुलिस में जाना is important. हम्म Because the if the amount is huge, say the amount is 10,000 or 12,000, something like that, you have to go to the police station because you cannot risk the amount, right? So you cannot just हम्म wait and you just manually go there and you just give your complaint so that it is easier for you and the process is sped up. Yeah. Okay. So I actually also wanna share something that in my case, like when I registered the complaint, मेरे को एक महीने के बाद I registered because I was too afraid to even step out of my house, and I was psychologically like threatened, and because I was told that मेरे नाम का एक arrest warrant है, so and so. It was a very serious case, and I could not share it with anyone. And so like I did not have the guts to step out of my house for one whole month, and this happened with me over 20 days tak I was in touch with the fraudsters, and who claimed to be cybercrime police officers, and whereas this public prosecutor. So ये सब चल रहा था, and finally when they I have lost around I mean a big amount, it's in lakhs. So I filed the complaint after 1 month, and I was obviously I was not मेरे को मतलब the cybercrime जब they did not file an FIR. So उन्होंने बोला कि ठीक है, आप physically लिख दो complaint, and I mean you just keep writing complaints to different departments, but कहीं से कोई भी response नहीं आता है. So I know that complaint काफी late हुई थी, because obviously नेक्स्ट डे आप नहीं जाके, जिस मेरे सीरीज में मेरे साथ लिया गया पैसा, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारा ले गया, सीरीज में लिया गया over a period of 15 days or so. So that is the reason, like till now the case is going on, and FIR अभी करी है उन्होंने. They don't even FIR भी वो नहीं note down नहीं करते हैं FIR. So it's because they also have to show up to the to the court कि भाई हमने FIR की है, so हम action लेंगे. But they don't even file an FIR, and you have to take rounds of police station. Now I am in touch with the police station, लेकिन वो they don't reply, and we can't visit the police station daily because it is out of your town. So Loveline, you have been through a lot. I think it's a sensitive topic for you, I think. yeah, it is. So that is why I wanted to even I am aware of this, and तभी awareness के लिए I want to participate in awareness. But yes, it's a very good initiative. Yeah, So yeah, I we get it. We get it, totally get it. it is. So Thank it was, and you. that is why they were successful in trapping me, and yeah, so that is the reason. Parcel fraud के बारे में मतलब I'm not sure if this has been discussed in this because I joined late. मैंने around 8 o'clock join किया था, so I'm not sure if this has been discussed, but yes, this is also happening. Parcel fraud भी हो रहा है. So I mean Aman sir and आप ऋषभ sir को पता होगा, like you can even इस पे भी we can spread awareness on this thing also. बहुत सारे अलग अलग तरीके के हो रहे हैं. But yes, मतलब authorities, what I want to say here is that authorities, हम blame करें ना करें, that is one and the same thing. कि आप फाइल कर दो कंप्लेंट, कई बार आ भी जाते हैं पैसे, कई बार नहीं आते. मेरे केस में ये था कि क्योंकि मैं लेट कराई कंप्लेंट, तो दैट इज व्हाई दे सेड दैट वी कांट डू एनीथिंग. सो इट्स the most important thing is कि आपको जल्द से जल्द कंप्लेन करानी है. दैट इज द बिगेस्ट लेसन. एंड वो ये कि अर्जेंसी अगर वो वैसे वो क्रिएट कर तो करते हैं सकता है। या
Thank you so much, Loveleen, for sharing your experience. We hope that you get the justice that you're seeking for, and this is exactly why we've kept this webinar, right? So that we can educate people and we can tell them that even though you are, you think that मेरे को अभी रुकना चाहिए, जैसे आपने एक महीने के लिए wait करा. If you would, I Mm-hmm. think you would have known about the cybercrime portal. It would have been easy for you, so that you could have डायरेक्टली रिपोर्टेड साइबर क्राइम से. और अगर वहां पे भी अगर आपको 10 या जितना हमें आइडिया, आई थिंक दे वर्क प्रिटी गुड इन अ प्रिटी गुड वे, सो दे वुड हैव helped you in that situation, but that's okay. This is how we learn. And Yeah. thank you for sharing your experience, most Thank importantly. you. And this is the main objective of this webinar, was so that everybody who has joined us is aware of the fact that things are happening, and we have to be aware of our surroundings so that we are not the one who are a victim of that. We are aware of it, and that is also one of the reasons this has occurred. Now we'll wrap up the session now. Thank you so much, everybody, for joining in. The feedback form is in the chat box. You can get a click on the link and you can fill the form, and your certificates will be initiated. Thank you so much for joining in. Is if you have Yes, any other, thank you everyone. If you have, yes, Gauri Shankar has raised his do hand. you have anything to say? You can unmute yourself and please. Yes, Gauri Shankar, go ahead. Hello, Gauri, thank yes, go you, ahead. Amani and Erika, ma'am. I am by name Anthony McCoy, and I'm also an international scholar in India, Delhi. So this is a good initiative, and I would love to participate in this to aware my fellow student, foreign student, and I myself. Starting to share my short stories related to this e-commerce issue, frauds, and it's not exactly something I should file my issue to Azontic online selling apps like Flipkart or Amazon. Sometime because I'm a model, there are this Instagram designers page who say they can customize products to people, and I've been a victim of this issue many times. I have lost thousands of rupees in the same manner. There are these Instagram pages that people say they are designers and they can make your shoes or clothes or whatever. I lay some little trust on them because I have their information like Instagram page names and their phone numbers. In these regards, I keep proceeding them to make my products, and at the end, they'll ask me for the payment, which I successfully did. But they will pack all the packages with information and details and say that your product will be delivered. But at the end, nothing's work out. And when I come back for the feedbacks, when I used to search the same Instagram page, the pages are not appearing anymore. They have disappeared, and even they blocks me on WhatsApp numbers and everything. So in this regards, is there any technique that will surely help me that I can gain their information back? This happened to me several times, many times, and I really need a help in this. See, what I would suggest you is there are always reviews on Google. Whenever you see a website, you see a Instagram page. What I personally, when I go through a Instagram page, I check their following. I check if there is good number of followers, and the because when you check their Instagram page, you need to skim through their page first. You need to understand what kind of work are they doing and what kind of products they are putting out. And moreover, if you think that it is a little skeptical, you need to do a background check. Just Google their name, just see if there are any reviews, because if you Google, you'll somewhere or the other, somewhere in the deep articles or something, you will find if they are skeptical, because someone would have put out a review about that. It is not if even on Reddit or somewhere, there would have been a review. So to protect yourself, and if it has happened with you several times, just make sure when you are conversing with them, ask for a legit, if their registration number, their GSTIN, exact for their company name, they must have that.
for their business name, what exactly is their business, and how professional it is. You need to ask for the details. You need to question them if you think that they are skeptical. So please make sure, please be aware of that. And if it has happened, make sure that you run to the cyber police station or a police station so that you can get your money back. It is not advisable that you don't take action on it. If it has happened several times, I hope that you have file a complaint against that, because there are Instagram pages that occur, and they go on and get the money, and they just don't deliver the products. So please just skim through their page, understand how they're working, and question them there, if the business that they are handling right now is legit, and ask for the GSTI number, ask for their business IDs. Go ahead, it's your right, it's a consumer right. You can ask the person. There's nothing to be afraid of that. So that was it for the session. Thank you so much everybody for joining in. The feedback form is in the in call messages, and please fill it, and you can start leaving if you want, or if you have any further question.